Hey everyone, good evening. Welcome to our live session of VMware vSphere 8.0. And this is core live session. So guys, I'll give you the complete information about the practical, how we can set up the environment for virtualization using VMware vSphere 8.0. It's a live session, so guys, so a few more engineer. I'm waiting for a few more engineers to join our live session. Then I can start with practical. So meanwhile, let me set up my lab for the VMware because you know that if you really want to be expert in VMware virtualization, it's mandatory for us. We must need to implement all the practical by self, right? So guys, please share the link with your office colleague and friends. uh, if you want to if you want to become a expert in VMware vSphere, and then definitely I'll give you the all content of VMware vSphere with the practical. So I'm waiting, guys. Please join fast, and then we'll proceed to our practical, right? Okay, Raj, congratulations if you got a job in VMware vSphere. So let me know if you face any problem in your real environment. Ping me and also connect me on LinkedIn, and you can uh, drop me message. You just need to follow me on LinkedIn, and definitely will give you solution because I'm available on LinkedIn up to 18 hours per day. So I'm sharing the LinkedIn profile, and you just need to follow me, and definitely I'll give you the proper solution related to not only the VMware. I'm able to help you in case of other technologies as well, like cloud and virtualization, cloud system administrator, and what we can say that Office 365, Microsoft Intune as well. Guys, I'm waiting for our setup. So let me check the status of our setup. Just give me 1 minute. Uh, Fine, Masood. No worry about it. If you don't have idea about the virtualization, but you are trying to be, if you have interest, like you want to be expert in VMware virtualization, I definitely help you. Like a number of contents already uploaded in my YouTube channel, तो आप वहाँ पे ना पूरी की पूरी playlist देख सकते हैं. If you open what we can say that our
YouTube channel and go to the playlist of VMware, I created all the videos from the very basic कि आप अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करेंगे and you can get all the content. और फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है जैसे रियल टाइम के केस में तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. Pankaj, thank you so much. Sir, thanks for your video series of VMware vSphere. Yesterday I got interview. Uh, okay, that I got selected. Arey wah, great. Congratulations, Pankaj. It's completely my pleasure. I always try to give you the best quality based content on my YouTube channel, and you can also connect me on LinkedIn, right? Because over a LinkedIn, I'm available 24/7 and definitely will immediately reply back you if you have any concern related to the what we can say that the VMware and not only the VMware, other technologies as well. I'm good with another solution as well. I'm waiting for a few more people. They are trying to join our live session, so we should wait up to 5 more minutes, and after that we'll start our class. Hmm. Pramod, your congratulations first of all, and you're most welcome. That guys, you are getting job from my videos, so it's completely pleasure for me, and I'm so glad to hear that कि आप लोग अच्छी अच्छी कंपनी में इन्फोसिस में आपने ज्वाइन किया तो very good. So feel free to connect me like if you face any issues. So I'm sharing my LinkedIn detail, and you just need to ping me on LinkedIn as well, and you can follow me on LinkedIn. I'm available for every solution. Guys, it's a live session, live VMware vSphere session. So Hello. hi Arvind, can you hear me? Yes, I'm able to. Okay, 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 okay. Fine, 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 fine. एक्चुअली Hmm. इस पे मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, तो मैंने टेस्टिंग के लिए फिर दूसरे नेटवर्क पर मोबाइल पे ट्राई कर रहा था कि उस वहाँ पे हो रहा है कि दोनों पे नहीं हो रहा था। तो अभी मैंने फिर से एक बार चेक किया तो हो गया अभी यहाँ पे कनेक्ट। हाँ, टीम्स में कभी ना कभी प्रॉब्लम आ जाती है. हाँ, राइट। Great. So, Abid, एक बार just recap the topic that we completed in previous class, and according to that, we can start our session. हाँ, चल एक्चुअली मैं रिकैप मतलब प्रिपेयर किया नहीं था क्योंकि Hmm. मैं आज ही गाँव से आया हूँ। हाँ हाँ हाँ. आप मतलब स्टार्ट कीजिए थोड़ा-सा, आप 1-2 मिनट में सिर्फ रिकैप कीजिए क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला आज। Hmm. लेकिन मैं कल थोड़ा-सा प्रिपेयर करूँगा क्योंकि ठीक है. एक्चुअली आपको मैं आपको डिस्कस भी करना चाहता था मैं। एक्चुअली मैंने एक सर्वर मैं परचेज़ कर रहा हूँ, मतलब सेकंड हैंड ही है। ठीक है. अपना इंटेल का जो Xeon E5 करके सीरीज़ है, Hmm. 2602 V4 है। Hmm. अम, 2 गीगाहर्ट्ज़ का है प्रोसेसर। Hmm. ऑलरेडी उसमें 96 जीबी रैम है। एक्चुअली मैंने एक दूसरे पर्पज़ के लिए लिया है, Okay. दूसरे काम के लिए। Hmm. लेकिन उसपे मैं थोड़ा-सा प्रैक्टिस भी करने और बाकी कुछ मुझे मुझे एक्टिविटी भी करनी है, Hmm. तो उसमें मैं करने वाला हूँ। ये मैं घर के लिए स्पेशली लिया है। Hmm.
तो उस वहाँ पे कॉन्फ़िगर क मतलब थोड़ा-सा मैं टाइम कल स्पेंड करूँगा थोड़ा, उसके बाद थोड़ा-सा रिकैप भी करूँगा मैं फिर से। What about the RAM? How much RAM available in your server that you're planning to purchase? 96 96 96 gig, जीबी, right? 96 या Great, यस, great. I think it's enough to perform all the practical related to VMware, and also it will help you in case of if you are trying to perform the task of migration, then definitely it will यस। help you. हाँ, एक्चुअली उसके लिए मैंने परचेज़ किया है और मेरे को दूसरे को नहीं, ये टास्क है वो कितने का परफ़ॉर्म कॉस्ट करने थे कॉस्ट मुझे। कितना पड़ा इसका? ऑलमोस्ट मुझे पड़ा है 35 का, 35,000? 35,000 का। जस्ट उसमें 35,000? से हाँ, एक्चुअली ये जो सेकंड हैंड जो मार्क मतलब ये है एक कंपनी से परचेज़ किया है। तो हाँ, वो गॉट इट। एक मेरी हाँ, तो एक एक कंपनी है वो सेकंड हैंड मतलब जो कुछ सर्वर रहते हैं वो परचेज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट लाइसेंस वर्ज़न है सर्वर 2012 का है और एंटरप्राइज़ 2 उसमें बे में 2 11 टीबी के 2 ये भी है, हम्म। हार्ड डिस्क भी है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट। हम्म। और एसएमपीएस तो ऑलरेडी उस सीरीज़ में तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 एसएमपीएस दो मिलते हैं। दो पावर सप्लाई पीएसयू उसमें मिल जाते 2 हैं। पावर हम्म। सप्लाई हाँ, पावर सप्लाई बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं उसमें, हम्म। तो वो है। तो 35 में और थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार हवा हो जाएगा और ज़्यादा। आप कहाँ पे तो हैं, मैंने मतलब कौन सी नेगोशिएशन करके लोकेशन पे हो? पुणे लोकेशन पे। मेरे को ना भी एक सर्वर चाहिए था। ठीक है, ओके, अगर आपको चाहिए क्या? हाँ, मेरे को भी चाहिए। अगर Xeon प्रोसेसर का मिल जाता है, बिकॉज रिसेंटली इन माय ऑर्गेनाइजेशन आई बॉट वन सर्वर मींस विद हाई कॉन्फ़िगरेशन। वो नया है बट डेल ईएमसी का। सो अगर ऐसा कुछ है ना ओके। तो प्लीज लेट मी नो, आई पे यू एंड आप वहां से कुरियर करवा देना। हाँ, चलेगा, है ना? चलेगा। मैं को कर देता 96 हूँ नहीं तो अरेंज हाँ, सिक्सटी कर फोर सकता हूँ मैं। जीबी पे भी मिल जाता है ना, तो आई एम गुड विद दैट। 96 जीबी इट्स रियली राइट, इनफ, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा बेटर हो जाएगा, बिकॉज करेंटली आई एम यूजिंग नॉर्मल Core i7 processor with 32 gig of RAM, or Xeon ओके। processor is basically designed for what we can say, especially designed for the server operating system ना। तो यस, आई यस, थिंक यस, बहुत यस, सही हो जाएगा, मीन्स सारी चीज़ें हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हम्म। यस। मैं आपको ये भी कर देता हूँ उसका अभी जो मैंने मतलब परचेज़ ऑलमोस्ट परचेज़ किया है मैंने, तो मैंने आपको ये भी स्क्रीन भी स्क्रीनशॉट शेयर किया अभी जस्ट इस पे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे। हाँ। मैंने अभी एक घर पे अभी लगाया है टेम्परेरी, उसके बाद में मेरे ऑफ़िस पे यहाँ पे मतलब जो ग्रेट, वहाँ पे ग्रेट, ग्रेट। पीएमएस पे भी लगा के वो सही है कर ना, दूँगा नहीं मैं। इसमें तो आप यू कैन मैनेज ऑल द प्रैक्टिकल, और यस, परफॉर्मेंस भी इसकी राइट, बेटर होगी, बिकॉज करेंटली इन 64 gig of RAM based machine आई एम यूजिंग up to 12 to 14 different virtual machine I'm able to run at a same time. Got it? So राइट, राइट, I think it's good for us, like in case of especially VMware virtualization. Anyway, let's just start our राइट। session and ओके, proceed for the या practical. So I think in previous class, श्योर, let me श्योर। start the recording first. ओके, And yeah, let me know if you able to see my screen. यस, या आई एम एबल टू। Great. So in the previous class of VMware, I think we talked about no, it's for Rajesh. VMware vSphere Live, VMware Live Weekend class. Okay. Okay, so I think we are trying to understand about the basic of VMware vSphere, like we discussed about on-premises virtual setup, and cloud environment, VDI environment, right? We talked about the यस, gap between work-based and technology-based, right? We have already discussed about these points. So bare metal and hypervisor is categorized into different part, like work-based and technology-based. So in case of hypervisor type 1, it's correlated to bare metal, and another is the hypervisor type 2 is related to the hosted virtualization, right? राइट, Fine. So I think we good with these points that we discussed so far. या ठीक है ना? So we also discussed about the infrastructure, means if you really want to be expert in VMware vSphere, so you should know about how we can implement the environment from very basic. So the diagram that you are able to see on your screen, it's a core the infrastructure that required for any organization. राइट, So minimum two different ESXI, one vCenter server, one domain controller, and one share store. Not one, at least two different share stores required to manage our environment of VMware, right?
And Right. installation of ESXi, the minimum hardware required 4 gig of RAM, 2 core of processor, and 40 gig of a hard drive. And we have a 4 different method to access our ESXi. One is DCUI, direct console user interface. Second, web client, vSphere client. Now, because in case after 6.5 or 6.0, we have option to access our VMware with the help of a web client only. So right now we don't have any option to access our ESXi by using the vSphere client. And the last Right. option is related to the vCenter server, right? So vCenter server can help us to connect Sorry. multiple website, multiple ESXi at the same time. Is that clear? Right. Yes. So we are Yes. Yes. trying to understand about the concept of ESXi. This is the infrastructure, ESXi host, DCUI, and number of virtual machine. And like we are trying to understand about how to create virtual machine. So meanwhile, let me access our VMware. I'm going to access our what we can say that I'm going to access our ESXi that I installed in my VMware workstation, and according to that we'll proceed for our practical. So the ESXi that I install in VMware IP address is 192.168.1.78. Okay, Okay. 192.168.1.78. You can just type on any browser. It will redirect you on the page of, right, it will redirect you on the page of the inventory, the ESXi inventory, because once we access the ESXi with the help of inventory, we can perform the all task. वर्चुअल मशीन क्रिएट करना या उसके अंदर जो भी टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट. Okay. Currently we don't have any SSLs, that's why it's asking for security, right? Right. Anyway, Right. so Right. I'm going to log in our ESXi host. This is the dashboard of our ESXi, and in previous class we have already talked about how to install, right, how to install ESXi and how to create virtual machine in the ESXi host. These 2 points we Right. have already discussed about. Our responsibility today's agenda, I'm going to guide you about how many option or how many virtual files are available in the in the uh, what we can say that in the virtual machine. Okay, so now um I think we discussed about the identification of these services. पोर्टल पे जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं इन पे हम ऑलरेडी हाँ, डिस्कस कर चुके हैं, लाइक डिस्कस आइडेंटिफिकेशन कर ऑफ चुका है मैं। हार्डवेयर, कौन राइट। सा हार्डवेयर है, ऑन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेज लाइक रैम का कंजप्शन कितना है, सीपीयू कितना कंज्यूम हो रहा है, एंड अबाउट द स्टोरेज पार्ट वी आल्सो कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ स्टोरेज, राइट? यस, यस, यस। ठीक है, सो वीएम के पार्ट पे चलते हैं. एंड इन केस ऑफ वर्चुअल मशीन, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन वर्चुअल मशीन. लास्ट क्लास में हमने वीएम क्रिएट किया था, उसमें शायद ऑपरेटिंग राइट। सिस्टम भी इंस्टॉल किया था, रिमेंबर? यस, इंस्टॉल किया था हमने। ठीक है, सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट कि और क्या क्या टास्क इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट अरे! मैनेज एंड कॉन्फ़िगर, मैनेज एंड कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन. ठीक है, वीएम को किस तरीके से मैनेज करते हैं या वीएम को किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सभी पार्ट हम कवर करने वाले हैं अभी. So what are the points required in case of virtual machine management? Our responsibility, we should know about create virtual machine in ESXi. पहला ऑप्शन हो गया. Then configure VM. In case of configure VM, क्या क्या टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, लाइक ऐड हार्ड ड्राइव. आप अपनी वर्चुअल मशीन में हार्ड डिस्क को कैसे, डेटा डिस्क को कैसे ऐड करते हैं, हाउ टू मैनेज निक कार्ड,
एनआईसी कैसे ऐड की जाती है, और जो उसके अंदर अदर ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं ना, वो भी पार्ट हम इस पे कवर करेंगे। ओके। नंबर थर्ड की बात करें तो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट फाइल्स ऑफ वर्चुअल मशीन। ठीक है, जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होती है ना, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ना दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन फाइल। ठीक है, सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द यूज केसेस कि किस तरीके से इनका यूज केसेस होता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। uh, are you able to hear me right? Because I'm facing some internet issues. Yeah. Yes, sir. Okay, okay, No, I'm able to hear you. No great. problem. Okay, so we'll talk about the virtual machines type, how many types are available in the virtual machine, और हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे about hot plug virtual machines hot plug. Have you idea about hot plug क्या होता है ये? यस, हॉट प्लग अगर एक्टिवेट आपने किया, हम्म, जैसे VMware, आई थिंक हॉट प्लग, हाँ, नहीं, तो VMware टूल का मुझे पता है, VMware हॉट प्लग का आई थिंक आपने बताया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम बे नहीं है। आइडिया नहीं। VMware tools is also a part of our environment. We must need to know about the use यस, cases of VMware tools कि क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी कंपनी में, किसी राइट। ESXi में जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सो वी शुड नो अबाउट इट। हाँ, VMware टूल का तो मतलब पता है, क्योंकि अगर कोई भी VMware जब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें से बेसिक बेसिक VMware टूल एज अ ड्राइवर रहता है, कि कोई कीबोर्ड माउस और एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम्म, या वो कंफर्टेबल अगर वो करने के लिए, तो VMware टूल अगर टूल इंस्टॉल करते हैं हम, तो इंस्टॉल करने के बाद हम वो प्रॉपरली वो एक्सेस कर पाते हैं, ड्राइवर का इशू कोई आता नहीं बेसिकली। तो हम्म, इसलिए वो जब भी हम करते हैं कोई तो VMware टूल अगर इंस्टॉल करने के बाद वो प्रॉब्लम हमें आता है जनरली, कीबोर्ड या माउस या उसका एक्सेस करने के लिए कोई प्रॉब्लम अगर आता है, हम्म, तो उसके लिए हम VMware टूल बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। और VMware टूल एक प्लस पॉइंट रहता है कि VMware टूल पे अगर वन इंस्टेंस टू मतलब एक VM से दूसरे VM पे अगर कोई डेटा कॉपी भी करना है, तो VMware टूल अगर इंस्टॉल रहा, हम्म, तो हम डेटा को कॉपी भी कर सकते हैं, राइट। सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? हाँ, VMware टूल अगर इंस्टॉल अगर है, तो हम एक VM से दूसरे VM तक वो डेटा हम ये भी कॉपी भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली, बेस मशीन से जो जो फिजिकल मशीन्स है ना, उनको आप राइट। वर्चुअल मशीन के साथ कोऑर्डिनेट करके डेटा ट्रांसफर हो गया। राइट, क्योंकि जब आप राइट, VMware टूल्स इंस्टॉल करते हो ना, तो बहुत सारे ड्राइवर्स ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं, करेक्ट? राइट, राइट, ग्रेट। राइट। OVA एंड OVA फाइल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। OVA एंड OVF, these all are the types of file that help us to create our virtual machine. VM को सेटअप करने के लिए ये दो फाइलों की रिक्वायरमेंट होती है, तो एज ए एडमिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी शुड नो अबाउट इट। ओके। Correct, correct, correct. It's a type of it's kind of drivers for the operating system of the virtual machine, क्योंकि you know that जब भी हम बेस मशीन परचेज करते हैं, लैपटॉप खरीदा या डेस्कटॉप परचेज किया, तो उसमें ड्राइवर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। वाईफाई ड्राइवर हो गया, इथरनेट ड्राइवर हो गया, साउंड ड्राइवर हो गया, या फिर अदर जो सर्विसेज आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए भी ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। सो यस, इट वर्क जस्ट लाइक एज अ ड्राइवर इन आवर मीन्स ड्राइवर फॉर आवर वर्चुअल मशीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो या वी क्लियर है। वी ऑलरेडी कनेक्टेड विद आवर वर्चुअल मशीन, हमने वीएम के साथ कनेक्टिविटी कर रखी है। तो व्हाट यू नीड टू डू, I'm going to check the virtual machine that I created, already created, और यहाँ पे ना इस VM की प्रॉपर्टीज में जाकर चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं और उन फाइल्स का टास्क क्या होता है। हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया था क्या लास्ट क्लास में? नहीं, नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिस्कस है नहीं हुआ। बिकॉज इन इन केस ऑफ सिस्टम एडमिन, इन केस ऑफ वर्चुअल
engineer, right? VMware engineer, Mhm. it's our responsibility. We should know about the method, है ना, कि ये कैसे मेथड Okay. होता है, मीन्स इन फाइल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फाइल्स आपको देखने को मिलेंगी ना VMware के केस में, वर्चुअल मशीन के, दीज फाइल्स कैन हेल्प यू इन Okay. केस ऑफ ट्रबल शूटिंग। अगर आप ट्रबल शूटिंग Okay. करेंगे ना, आगे आने वाले क्लासेस में हम बात करेंगे कि कैसे ESXi होस्ट को हम अपने पुटी टर्मिनल के थ्रू या SSH के थ्रू, Okay. पुटी टर्मिनल के थ्रू CLI के जरिए वर्चुअल मशीन को एक्सेस करेंगे। एंड सो व्हेन वी एक्सेस अवर वर्चुअल मशीन विद हेल्प ऑफ CLI, देन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू ट्रबल शूट द बैक एंड ऑफ वर्चुअल मशीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। L3 लेवल के इंजीनियर, L2 प्लस लेवल के इंजीनियर को ना अच्छा खासा आइडिया रहता है कि VM को कैसे ट्रबल शूट किया जाए ESXi की, सॉरी, पुटी टर्मिनल पे SSH के थ्रू या CLI कमांड के जरिए। Okay. चलो, Okay. so I'm going to open storage because our virtual machine is stored in our the storage part, और लोकल स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज में डेटा ब्राउज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखो दोनों वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल एंड विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अवेलेबल। सो किसी भी वीएम पे आप क्लिक करोगे ना, ये आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा अबाउट द फाइल्स, अबाउट द वर्चुअल Okay. फाइल्स। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 to 8 डिफरेंट फाइल्स आर अवेलेबल इन आवर VMware फोल्डर, है ना। तो स्टार्टिंग में Right. क्या है, VM डॉट स्कोर बोर्ड। सो स्कोर बोर्ड फाइल जो है ना, विच इज नॉट रिलेटेड टू द ESXi, एक्सक्यूज मी, we establish our environment VMware ESXi को हमने VMware वर्कस्टेशन 17 Pro पे इंस्टॉल किया है, रिमेंबर। जो हमारा सिस्टम रन कर रहा है ना Yes. ESXi, वो 17 Pro पे है। तो ये जो स्कोर बोर्ड है Right. ना, ये VMware वर्कस्टेशन 17 Pro का फीचर है, विच इज Right. नॉट अ फीचर ऑफ ESXi। मतलब अगर आप अपने ESXi को बेस मशीन पे इंस्टॉल करोगे ना, तो आई डोंट थिंक कि ये फाइल Mhm. आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब हमको स्टार्ट करना है VMware लॉग से। द VMware लॉग, मतलब जो हाँ, प्रीवियस वर्जन है उसमें ये है ही नहीं। नहीं नहीं, प्रीवियस वर्जन प्रीवियस में नहीं है, मतलब यस 17 16 में आपको नहीं मिलेगा। राइट, एंड आई डोंट थिंक कि राइट, राइट। ये आपको अदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ये सक्साई वाला पार्ट है उसमें भी नहीं मिलेगा। ओके, सॉरी। हेलो। या आई कैन हियर यू। हाँ, आई थिंक आवाज नहीं आ रही थी आपको इसलिए। ठीक है, लॉग फाइल, उसके बाद विंडोज 10 डॉट एन वी रैम, द थर्ड फाइल इज रिलेटेड टू विंडोज 10 डॉट वी एम डी के, और चौथी फाइल यहाँ पे है विंडोज 10 डॉट वी एम एस टी, और पांचवी फाइल है हमारे पास विंडोज 10 डॉट वी एम एक्स। ठीक है ना। ये अपने पास कुछ राइट, फाइल्स हैं, दीज फाइल्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर वर्चुअल मशीन। हर एक फाइल की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक फाइल का अपना टास्क है, ठीक है ना। तो वी शुड राइट, नो राइट। अबाउट द यूज केसेस ऑफ दिस फाइल, हमें मालूम होना चाहिए इन फाइल्स का काम क्या है, इन फाइल का टास्क क्या है। इज दैट ओके? या ठीक है, सो लेट मी प्रोसीड फॉर द फ्रॉम द वेरी बेसिक इन द सेंस लाइक एज यू नो दैट vm dot log। so ठीक है, so vm dot log as per the name suggest it is responsible to contain, it is responsible to contain the log detail of our virtual machine। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? लॉग डिटेल का मतलब क्या हुआ, यस। कि आपने वर्चुअल मशीन को कितनी बारी टर्न ऑन किया, कितनी बारी आपने रिस्टार्ट किया, इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्चुअल मशीन स्टेटस। ये वर्चुअल मशीन के स्टेटस को आपको प्रोवाइड करेगा, ओके, राइट। जब भी हम VM क्रिएट करते हैं, राइट, whenever we create our virtual machine in the ESXi, ये आपको ऐसे ही कुछ फाइल्स प्रोवाइड करेगा, लाइक vmware.log। सेकेंड फाइल इज रिलेटेड टू द विंडोज 10, जो भी है वर्चुअल मशीन के नेम के अकॉर्डिंग। it will give you the access of the another file nvram। so what do you think about the nvram? Any idea about the nvram? हाँ, यस, NVRAM is responsible to contain, I think the BIOS, um, of a virtual machine.
It's a kind of BIOS, yeah, correct. It's a type of BIOS which is responsible to contain the BIOS related to the virtual machine. NVRAM, as for the name राइट, suggests, non-volatile रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना। तो राइट, NVRAM राइट, क्या हुआ है कि ये नॉन वोलेटाइल है। एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल दैट कैन इरेज द डेटा वंस यू रीस्टार्ट योर मशीन, आई थिंक, है ना। राइट, जब आप मशीन को रीस्टार्ट राइट, करते हो इट ऑटोमेटिकली इरेज द डेटा, बट NVRAM में परमानेंट डेटा स्टोर रहता है, जैसे कि रोम हो गया अपने कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में। और राइट, दूसरा, यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द बायोस फीचर, है ना। और या तीसरी फाइल अपने पास अगर हम बात करें तो द थर्ड फाइल रिलेटेड टू द वर्चुअल मशीन इज डॉट वी एम डी के। वी एम डी के क्या है ना कि जब भी आप वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करते हो, है ना, जब आप वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करते हो, लाइक एज हाइपरवाइजर का आपने सेटअप बनाया, उस पर वीएम क्रिएट करना चाहते हैं, आपने ओपन स्टैक का सेटअप बनाया, यू वांट टू स्टैब्लिश योर इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ VMware vSphere या ये द VMware वर्कस्टेशन। तो हर एक केस में वर्चुअल मशीन्स की एक फाइल बनती है जिसको हम VMDK से फॉर्मेट कर, VMDK फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। एंड दीज फाइल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द मेन हार्ड ड्राइव जिसमें OS हम इंस्टॉल करेंगे ना, वो आपका VMDK में स्टोर होगा। ऑल गुड। या And VMSD, as per the name suggests, virtual machine snapshot data, right? या So snapshot data यस, is basically related to the metadata, अपने नंबर ऑफ कितने स्नैपशॉट लिए अपने वर्चुअल मशीन के, और कितने स्नैपशॉट्स फेल हुए हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको .vmsd से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट फाइल है यहाँ पे वर्चुअल मशीन की, और इस फाइल को हम डॉट वी एम एक्स के नाम से जानते हैं। एंड द यूसेज ऑफ डॉट राइट, वी एम एक्स, इट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जो भी इन्फॉर्मेशन, रैम राइट, सीपीयू वगैरह है ना, वो रैम सीपीयू की डिटेल, निक कार्ड कितना है, हार्ड डिस्क डेटा ड्राइव कितनी अवेलेबल है ना, ये सभी राइट, इंफॉर्मेशन आपकी डॉट वी एम एक्स में अवेलेबल रहती है। मतलब इन फ्यूचर अगर आप ओके, चेंजेस भी करते हैं ना कोई हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपकी डॉट वी एम एक्स में स्टोर होती है। ऑल गुड। ओके, ओके, ठीक ऑलराइट, है। अभी हमारे वर्चुअल मशीन की कंडीशन क्या है, टर्न ऑफ है। एंड टर्न ऑफ के केस में हमें कितनी फाइल्स मिल रही है, नंबर ऑफ फाइल्स आर अवेलेबल 5, क्योंकि स्कोर बोर्ड को आप कंसीडर यस, नहीं करेंगे। कोई भी कंपनी VMware ओके, वर्कस्टेशन का इस्तेमाल नहीं करती उसके सेटअप को कॉन्फ़िगर करने के लिए, है ना। राइट, राइट, Organization राइट, companies always try to set up their infrastructure with the help of ESXI host, है ना। कोई भी कंपनी ओके, राइट, इसमें वर्क स्टेशन के जरिए अपना इन्वायरमेंट सेटअप नहीं करती, है ना। सो ओके, लेट्स राइट, मी प्रोसीड एंड टर्न ऑन करते हैं, एक बार वर्चुअल मशीन को टर्न ऑन करते हैं। एंड लेट्स सी कि और कितनी नंबर ऑफ फाइलें हमें मिलती हैं, ठीक है। विंडोज़ 10 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लेट मी टर्न ऑन आवर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आई थिंक हमने OS इंस्टॉल कर दिया था, आई डोंट नो, लेट मी चेक इट। या तो ये VM अभी टर्न ऑन हुई हमारी। नो, इट्स नॉट विद ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे बेस मशीन की ही ना हार्ड डिस्क को कंज्यूम कर रही है, नॉट एन इशू। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी जस्ट चेक कि मशीन को टर्न ऑन करने के बाद ना कितनी नंबर ऑफ फाइलें बढ़ जाती हैं। सो विंडोज 10 पे गए, अब आप नंबर ऑफ फाइल्स देखिए यहाँ पे कितनी है। ओके, इसके पहले कितनी फाइल्स थी और अभी कितनी फाइलें हमारे पास अवेलेबल हो गई। मोर देन 10, मोर देन 10 स्कोर बोर्ड कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सी फाइल अवेलेबल हो गई। एक तो vm1.log आ गई। अब जितनी बारी मशीन को रीस्टार्ट यस, करेंगे ना, स्टॉप करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, या जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ये फाइल उसमें ऐड होती जाएगी। ओके, इज दैट ओके? या ठीक है। सो अगला ऑप्शन है, दिस इज द फाइल विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द VSWP। अब देखिए डॉट VSWP, सो द मीनिंग ऑफ VSWP इज ओके, रिलेटेड टू स्वैप मेमोरी। स्वैप मेमोरी, हैव यू हर्ड अबाउट कैश मेमोरी? यस, विंडोज के केस में कैश मेमोरी होती है, राइट। विंडोज से कैश में भी, राइट, हम्म।
सो कैश मेमोरी अगर आप मैनेज करते हैं ना, कैश मेमोरी अगर आप बात करें तो विच इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल द लोड ऑफ आवर वर्चुअल मशीन। जब भी आपका ऑन प्रोमाइसिस की मशीन, अगर हम बेस का एग्जांपल लें, लैपटॉप स्लो चल रहा है या डेस्कटॉप स्लो चल रहा है, तो हम कहते हैं कैश मेमोरी एक बार चेक कर लेते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं या हाई कर देते हैं। सो इट मीन्स दैट राइट। द कैश मेमोरी रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द स्पीड, और ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे रैम और सीपीयू का, सॉरी रैम एंड हार्ड ड्राइव का, जो अवेलेबल स्पेस होता है एंड हार्डवेयर, उसका, राइट। हार्ड डिस्क का राइट। कॉम्बिनेशन होता है। अगले ऑप्शन पे बात यस। करें तो यहाँ पे विंडोज 10 का है VSWP सेकंड, जिसमें 4 GB का स्पेस दिखाई पड़ रहा है, एंड वी आर एबल टू गेट अ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ VSWP। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ VSWP का मतलब ये है कि एक आपका कैश मेमोरी दिखा रहा है VMware वर्कस्टेशन का, और दूसरा जो कैश मेमोरी है विच इज रिलेटेड टू द ESXi, दोनों का अलग अलग दिखा रहा है। ओके। ओके। ठीक है। बाकी एनवी रैम पुराना हमने पहले भी डिस्कस किया, एनवी रैम के बारे में, VMDK के बारे में बात की, VMX के बारे में बात की, बस दो फाइलें और बढ़ गई यहाँ पे, विच इज VMX.LCK, और दूसरा है अपने पास Windows 10.VMX.Tilda फाइल, है ना। तो ये दोनों फाइल की ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इन दोनों फाइलों का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इन दोनों फाइल के थ्रू, इन दोनों फाइलों के जरिए आप अपने इन्वायरमेंट में, राइट, आप अपने इन्वायरमेंट में जब रनिंग मशीन होती है ना, आई डोंट थिंक वी आर एबल टू मेक एनी चेंजेस विद हार्डवेयर। हार्ड डिस्क लगा सकते हैं आप, ओके। स्टोरेज मैनेज कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि हम उस पे काइंड ऑफ रैम या सीपीयू को इंक्रीज कर सकते हैं। वी आर अनएबल टू डू दैट, है ना। ओके। ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इस केस में, आपने क्या करना है कि जो VMX.LCK है ना, ये लॉक है, मीन्स यू आर अनएबल टू मेक एनी चेंजेस। बट यहीं पे अगर जब आप अपने इस सर्विस को अनलॉक कर देते हो, हॉट प्लग जब आप एक्टिवेट कर देते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर, तो आप अपने रनिंग मशीन में भी हम्म। रैम और सीपीयू को चेंज कर सकते हैं। सो ये दो फाइलें ओके। हमारी हेल्प करती हैं इन केस ऑफ चेंज द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ESXi वर्चुअल मशीन, ESXi के अंदर रन करने वाली वर्चुअल मशीन के अंदर अगर आप चेंजेस करना है, तो ये दोनों फाइल आपकी हेल्प करेंगे। ओके। ऑल गुड। या। ऑल गुड। ओके ग्रेट। सो कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। या श्योर। ठीक है। अगले स्टेप पे अगर हम बात करें, तो ये तो फाइल्स के से रिलेटेड बातें हो गई, अब हम अगले पार्ट पे मूव करेंगे। आई एम गोइंग टू एक्सेस अवर रनिंग वर्चुअल मशीन, जो भी वर्चुअल मशीन हमारी रन कर रही है ना, एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं, बिकॉज इसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, है ना। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न ओके। ऑन द वर्चुअल मशीन जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम शायद है इसमें, बट आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म। नो 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 नो। ओएस इंस्टॉलेशन हमने नहीं डिस्कस किया था, रिमेंबर, हाउ टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग एक्चुअली हमने सिस्टम। किया था। हाँ। हाँ, एक्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल भी की थी। वो लास्ट टाइम कुछ ये हुआ था ना, आप बोल रहे थे कि फॉर्मेट करना था कुछ, तो लास्ट वीकेंड में हमारे वीकेंड में हुआ नहीं था। हम्म। तो आई थिंक हमने फॉर्मेट किया था क्या यस कुछ? यस यस, आई हम इंस्टॉल्ड हमने ऑन विंडोज 10 किया था हमने। किया था, मुझे पता है, जस्ट जब हमने हमारा फर्स्ट सेशन होने के सेकंड सेकंड सेशन में हमने किया था। just विंडोज 10 allow किया me था वन हमने मिनट, इंस्टॉलेशन। क्योंकि आई हैव इंस्टॉल मल्टीपल ESXi होस्ट, तो मेरे आई थिंक ओके। आई यू आई एम यूजिंग अ डिफरेंट ESXi, सो लेट मी टर्न ऑन अनदर ESXi। ठीक है। तो उसमें हमें ये मिल जाएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो दूसरी ESXi मैं टर्न ऑन कर रहा हूँ, and it will take 2 minute time. So once our ओके। ESXi is ready, we'll access it again and ओके। talk about the concept, means कि उसमें hot plug वगैरह कैसे यूज किया जाए, है ना। ओके। Did you download the softwares ESXi वाला? हाँ, डाउनलोड करके रखा है मैंने अभी तक, मतलब कुछ किया नहीं है। डाउनलोड करके ओ, रखा है मैंने, कल मैं थोड़ा सा कर दूंगा, थोड़ा टाइम लेके थोड़ा सा लेके कर दूंगा मैं कल। क्या क्या आपने किया है डाउनलोड? मैंने ये
VMware का एक्चुअली भी ये 17 ये जो आपने जो किया था वही भी मैंने किया है, उसका क्रैक भी मैंने करके रखा है, राउंड करके रखा है मैंने हम्म ऑलरेडी। हम्म वो कल मैं थोड़ा कर दूंगा ठीक है, कॉन्फ़िगर। ठीक है। Okay, so okay, so I'm just going to access our ESXI host 192.168.1.3 है ना? So I think ये वाला ESXI host था जिसमें हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट किए थे। Let me check. नहीं, राइट राइट, आई थिंक यही था 92.161.3। One virtual machine available, one storage. So let me turn on it. ठीक है, we are able to find one virtual machine is running in our ESXi host, and our responsibility we should know राइट, about the options which are available in this particular virtual machine. जो भी इसमें इसकी properties में options दिखाई पड़ेगा हम उन पे discussion करेंगे, है ना? ओके ओके। So what is task of VMware tool? Why it is important and why we need to configure it? VMware टूल करने के बाद मतलब अगर हमने VMware टूल इंस्टॉल किया तो जो ड्राइवर के इश्यूज आते हैं बहुत सारे, मतलब हम्म कीबोर्ड माउस वर्क नहीं करता, हम्म तो उसके लिए हम VMware टूल बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करते हैं। और जो दूसरा जो है मैंने बताया था कि डेटा कॉपी करने के लिए यूज कर सकते हो उसको, तो इसलिए हम VMware टूल इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। So what I'm going to do, I'm going to access our virtual machine on another page, another means सॉरी। विजेट पे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्शन पे क्लिक करने के ओके बाद ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक्शन पे क्लिक करने के बाद इट गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे विंडोज 10 पावर, पावर के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल लाइक पावर ऑफ, सस्पेंड एंड रीसेट, है ना? तो एज पर द नेम सजेस्ट इज दीज ऑप्शंस आर सेल्फ एक्सप्लेन्ड, सो आई डोंट थिंक वी नीड टू डिस्कस अबाउट दीज थ्री डिफरेंट ऑप्शंस, है ना? ये अपने आप में ही ओके। क्लियर है ना डाउट की। ठीक है, आपने पावर ऑफ करना है, ई एस एक्स आई वर्चुअल मशीन को बंद करना है, तो देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द पावर ऑफ एंड सस्पेंड इन द सेंस यू आर टू पॉज द वर्चुअल मशीन, है ना? आप इसको इसी पेज राइट पे रुकना राइट चाहते हैं, देन यू कैन प्रोसीड विद दैट। राइट। Okay, and the another part is guest OS. Under the guest OS, we are able to find multiple options: shut down, restart, send key, and the install VMware tools, unmount VMware tools, and upgrade VMware tools. These options are grayed out because ओके we recently installed our VMware tools. So I think as such कोई requirement नहीं है कि हम अपने existing VMware tools को update करने की requirement हो. Is it? ओके ओके। Great. Let's talk about snapshot and console. Before snapshot, let's try to understand about the console option. The use of console, it gives us a option to connect our virtual machine. क्योंकि अभी जो हमने VM ऑन किया है ना, वो डायरेक्टली ESXi होस्ट के अंदर अवेलेबल है. Is it? ओके The VM that we establish, which is a part of our ESXi, means अगर आपको VM access करना है, तो then you can open the ESXi in GUI format and then we are able to do that. But I don't want to, don't want to open it every time कि क्योंकि ESXi का एक्सेस किसी और के पास रहेगा और हमें अपने क्लाइंट पे या फ्लोर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट? ओके चलो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कंसोल पे, ओपन कंसोल इन ब्राउजर, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन कर देगा। बट वी हैव अनदर ऑप्शन एज वेल, हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है जिनको हम वर्चुअल मशीन को नए विजार्ड पे ओपन कर पाएंगे।
वी आर ट्राइंग टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन ऑन अ सेपरेट विजेट, और आप इसका आरडीपी भी एक्सेस कर पाएंगे, राइट? वी कैन ऑल्सो एक्सेस द आरडीपी. Go to the console, and in the console we are able to find open console in new wizard, open console in new tab, and launch remote console, और ये है DMRC, सॉरी VMRC. द VMRC इज कंसिडर एज ए VMware से। वर्चुअल मशीन रिमोट कंसोल, है ना? तो एक छोटा सा टूल ओके, होता है जो ओके, आप अपने मैक मशीन, या फिर आपके पास अगर विंडोज मशीन है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू कैन यूज इट एंड यू कैन एक्सेस इट. All good? ओके, So what I'm going यस, to do, let me connect it with the new tab, right? So the new tab can help us. It look like this. See? So we just need to click on this icon and keyboard पे जाएंगे, and under the keyboard, not keyboard, in guest पे जाएंगे, send key पे जाएंगे, all control delete, यानी आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दे देगा ये. तो ओके, यहाँ पे हम इस मशीन को लॉगिन करा लेते हैं, बिकॉज आई वांटेड टू चेक द आईपी एड्रेस, और हमें इसमें ना हार्ड डिस्क वगैरह ऐड करके देखनी है. आई नीड टू चेक हाउ टू ऐड द हार्ड ड्राइव, हम इसमें कैसे हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं. ठीक है. ये विंडोज़ 10 की मशीन हमने इंस्टॉल किया था, और एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें हार्ड डिस्क कितनी अवेलेबल है, और फिर थोड़ा थोड़ा एडिटिंग का पार्ट हम कवर करेंगे. डिस्क mgmt.msc, ठीक है. डिस्क मैनेजमेंट ओपन करते ओके, हैं टू आइडेंटिफाई द number of hard disks are connected with this machine. Okay, so now we are able to find 19 gig के आसपास हार्ड डिस्क है, और दूसरा डीवीडी है. आई डोंट थिंक वी नीड डीवीडी, तो इसको हम अनमाउंट भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज ये बूट करना स्टार्ट कर देगा. हम्म. ओके, ग्रेट. सो थिंक अबाउट, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, अगर डे टू डे एक्टिविटी की बात करें इन केस ऑफ रियल इन्वायरमेंट, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू know about the procedure. Client ने request किया, I need to connect 100 gig of hard drive with our virtual machine, existing virtual machine, or you need to extend the hard disk space. 200 GB की है, आप उसको 500 GB करना चाहते हैं, या रिक्वेस्ट आई है, so we should know about the procedure, how we can do that, है ना? So as ओके, a VMware admin, it's our responsibility. We should know about the options that require to manage it. So what we need to do, we just need to go back to our admin center, जो admin का panel है. This is the panel of administrator, means जो root account के through आपने access किया, and we just need to click on action, and it will give us option to click add hard drive. यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटिंग ओपन करना पड़ेगा. वी जस्ट नीड टू ओपन द सेटिंग ऑफ आवर वर्चुअल मशीन. और ब्राउजर रिक्वायर्ड मोर सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू गेट अ इंटायर ऑप्शन. सो आपने क्लिक करना है एडिट सेटिंग पे. एडिट सेटिंग पे वी जस्ट नीड टू find multiple option. The current configuration of our virtual machine is started from the CPU. The capacity of CPU is 2 core CPU, 2 gig of RAM, hard drive 20 gig, और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, है ना? सो ओके, आर ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी जस्ट नीड टू ऐड वन डेटा डिस्क. एक नई डेटा डिस्क यहाँ पे हम ऐड करने की कोशिश करते हैं. सो आई एम गोइंग टू ऐड वन डेटा डिस्क, और after that we'll access the same data, same hard drive in our virtual machines. यहाँ पे मल्टीपल ओके, ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. whenever we click on the add disk, we just need to click on add hard drive, new standard disk, ठीक है ना? existing hard drive, new persistence memory disk, और यहाँ पे है raw disk, न्यू रॉ डिस्क. अब दो ऑप्शन देखिए, ग्रेड आउट दिखाई पड़ रहा है. वाई? बिकॉज वी हैवन ओके, सेट अप एनी काइंड ऑफ शेयर स्टोरेज. हमारे पास कोई भी शेयर स्टोरेज नहीं है, एनएफएस नहीं है, आईएसकेजी नहीं है, राइट, एसएमबी नहीं है. दैट्स वाई वी आर अनेबल टू गेट द ऑप्शंस रिलेटेड टू द शेयर स्टोरेज. सॉरी, ओके। द रॉ डिस्क मैनेजमेंट और परसिस्टेंस मेमोरी भी हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है. अ, अगर मैं अभी मेरे पास जो सर्वर है वो मैं जब कॉन्फ़िगर करूँगा, तब मैं वो उसमें कर पाऊँगा क्योंकि उसमें हार्ड डिस्क भी है और ये भी तो उसमें मैं कर सकता हूँ ना और उसमें अगर मुझे करना है, तो अभी उसमें विंडोज़ सर्वर 12 है, हम्म. लेकिन वो उसमें वर्चुअल उसमें मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें बूटेबल में पेन ड्राइव करके डायरेक्टली मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ एज़ अ
इस पे हार्डवेयर पे डायरेक्टली कर सकते हो, राइट? डायरेक्टली बेस मशीन पे आप करना चाहते हैं, राइट? हाँ, बेस मशीन पे कर you सकते, you राइट? you can do that, you can do that, but problem क्या है ना कि we are responsible to install multiple services, है ना? हमें हाँ, दो हाँ, राइट, ESXI राइट, राइट, चाहिए, एक राइट, राइट। vCenter सर्वर चाहिए, फिर एक सर्वर हाँ, चाहिए, है ना? राइट, 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 तो बेटर ये राइट, राइट, रहेगा कि हाँ, भाई आई आप वर्क फॉरगॉट। स्टेशन इंस्टॉल करो 17 प्रो का, और उसमें VM बना ओके, बना करके अच्छा कॉन्फ़िगरेशन दे दे करके सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखो, ठीक है। है ना? ओके, ओके, गॉट इट। तो एग्री, एग्री, एग्री। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू ऐड वन हार्ड ड्राइव विद कैपेसिटी नॉट मच, 10 GB के एक हार्ड डिस्क अटैच कर देते हैं यहाँ पे। ओके, वंस यू सेव इट एंड बैक टू द वर्चुअल मशीन ना, आपको देखो यहाँ पे इमीडिएटली आपको एक हार्ड डिस्क दिखना स्टार्ट हो गई विथ 10 GB ऑफ स्पेस। ओके, आप इस पे राइट क्लिक करो, ओके। इनिशियलाइज डिस्क करो, जीपीटी एंड एमबीआर। हैव यू आइडिया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जीपीटी एंड एमबीआर? अम, इट विल हेल्प यू इन केस ऑफ रियल इन्वायरमेंट ट्रबल शूटिंग। अभी याद नहीं लेकिन हम्म हाँ, लेकिन आइडिया तो था मुझे, लेकिन अभी याद नहीं मुझे। MBR and GPT is basically correlated to MBR and GPT is correlated to डिस्क मैनेजमेंट। ये क्या है? डिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। MBR की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? MBR is basically based on um, master boot record, and the usage of master boot record is basically can help you to create maximum 4 primary partition, and you are unable to create a single partition with more not more than 2 TB। मतलब जो ओके, मैक्सिमम हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है ना, वो आप 2 TB से ज़्यादा नहीं क्रिएट हम्म, कर पाएंगे अगर आप MBR हार्ड डिस्क का सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे तो। ओके, हम्म। ओके, गॉट और इट। अगर आप जीपीटी जाते हैं, अगर आप जीपीटी पे जाते हैं, हम्म, तो GUID partition, the meaning of GPT is GUID partition table, and the usage of GUID partition table जिसमें आप मैक्सिमम आई थिंक 256 TB की पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल 256 TB की पार्टीशन तैयार की जा सकती है। राइट, है ना? सो और यस, जो प्राइमरी पार्टीशन है वो 128 प्राइमरी पार्टीशंस वी कैन क्रिएट इन आवर उन केस ऑफ जीपीटी। तो ठीक है, आज की डेट ओके, में यू नो दैट हर एक कंपनी को एक लार्ज स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो वी शुड नो अबाउट कि हम जितनी भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे ना, उनमें हम लगभग जीपीटी का ही सिलेक्शन करेंगे। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, रियल टाइम के केस में जब आप रियल टाइम इन्वायरमेंट की बात करते हैं ना, तो रियल टाइम के केस में मान लीजिए आपने हार्ड डिस्क को ऐड कर रखा है, आपने हार्ड डिस्क को अटैच कर रखा है इन फॉर्मेट ऑफ MBR, in format of MBR, and client want to increase the hard disk capacity more than 4 TB, more than 2 TB। ठीक है, सो इस केस में यू आर अनेबल टू मेक एनी चेंजेस। आप अपने हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को 1 TB से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है, सो दैट्स वाई यू ऑलवेज प्रोसीड ओके, विथ, क्योंकि जब आप नो मैटर आपके पास फ्री स्पेस 5 TB तक है या फिर और हार्ड डिस्क आप ऐड करना चाहते हैं, यू आर अनेबल टू क्रिएट अ पार्टीशन मोर देन 2 TB, और वो ग्रेड आउट दिखाई पड़ेगा। तो वी शुड ओके, नो अबाउट, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपको रियल टाइम में फेस करने को मिलती है, क्लाइंट का कोई टिकट है जिसमें जो है आप मीन्स साइज इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो, तो यू मस्ट नीड टू चेक एट दिस वंस कि कहीं हमारी हार्ड डिस्क जो है MBR में तो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज यू नो दैट MBR कैन सपोर्ट ओनली 2 TB ऑफ हार्ड ड्राइव। We can create only 2 TB ओके, of maximum partition, and GPT can help you up to 256 TB, huge gap between MBR and GPT। Mhm. ओके, So we successfully added one hard drive in our virtual machine. So let me create partition and put our data, जो भी आपको चाहिए, whatever data that you want to store in your virtual machine, the data disk will help you। All good? यस, Great. So what I am going to do, I'm going to
show you the another options which are available in our virtual machines properties. So let me identify what other options are available, है ना? So we just need to click on action, and in the properties of our virtual machine n number of options are available. Console okay, and auto start, you can schedule the auto start, like you can decide the timing, and according to the timing you can turn your virtual machine will be automatically turned on. Clear? Okay. Okay. Yeah, clear. Great, great. And editing of virtual machines, let's talk more about the options which are available in the editing of virtual machines. Multiple options we are able to find, like you can change the hard drive, you can change the CPU and RAM capacity, and you can add an additional adapter, you can add an additional kind of video adapter. Lots of options are available, right? So sometime you need to set up any kind of NIC teaming. So you know that in case of NIC teaming, minimum 2 different NIC card required. दो NIC की जरूरत पड़ती है to set up our NIC teaming. तो वो सारी एक्टिविटी हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन से परफॉर्म कर पाएंगे. All good? Yeah. Great. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हॉट प्लग के बारे में. सो डू यू वांट टू ऐड समथिंग लाइक व्हाट इज मीनिंग ऑफ हॉट प्लग अकॉर्डिंग टू यू? बेसिकली जैसे कोई अगर अपग्रेड करना है हमें रैम या कोई मतलब हार्डवेयर रिलेटेड कोई अपग्रेड करना है तो इंस्टेंटली अगर हॉट प्लग अनेबल रहा तो हम अगर वो इंस्टेंस चालू भी रहा तो हम फिर भी कर सकते हैं हॉट प्लग के विद द हेल्प ऑफ हॉट प्लग हाँ जी, we can कॉन्फ़िगरेशन we हम can change the RAM and processor in case of our virtual machine is running, है ना? अगर हमारी यस VM रन कर राइट रही है तो उस केस में भी हम अपने हार्ड डिस्क और CPU को क्या कर सकते हैं, रनिंग वर्चुअल मशीन के केस में रिप्लेस कर सकते अपग्रेड हैं या कर चेंज सकते कर हैं राइट सकते हैं. राइट इज इट करेक्ट? यस यस Great. So let's talk more about it, hot plug को, because by default अगर हम अभी करंट टाइम पे वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू चेंज द CPU एंड रैम, आई डोंट थिंक वी आर एबल टू डू दैट. आप देखिए दोनों ऑप्शन ही ग्रेड आउट दिखाई पड़ रहे हैं. राइट It means या that फिर अब दिखाई you are not authorized to make any changes with CPU and RAM. अभी तो possible ही नहीं है because your machine is currently running. And think about production environment में तो you know that VMware की case में तो uh, no one can give you authority to restart the virtual machine in production environment. राइट तो उसके लिए किया जाता है, वी जस्ट नीड टू एक्टिवेट द हॉट प्लग, और हॉट प्लग को एक्टिवेट करने के लिए भी हमें मशीन को टर्न ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है, ये ग्रेड आउट दिखा रहा है. इज दैट करेक्ट? ओके यस तो सबसे पहले हम वीएम को टर्न ऑफ कर देते हैं एक बार, और फिर उसके बाद हॉट प्लग को एक्टिवेट करेंगे. मशीन को टर्न ऑफ किया, बैक टू द वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज, सेटिंग पे जाएंगे, एडिट सेटिंग पे जाएंगे, और अभी हम देखेंगे तो हॉट प्लग में भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा. जस्ट नीड टू क्लिक ऑन मेमोरी, और इसमें आप देखिए मेमोरी हॉट प्लग, पेज को यस रिफ्रेश करना पड़ेगा बिकॉज आवर वर्चुअल मशीन इज स्टिल इज इन प्रोग्रेस. ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए वी हैव ऑप्शन टू चेंज इट, बट हर बारी हम मशीन को टर्न यस ऑफ करके नहीं करेंगे ना, बिकॉज प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं क्लाइंट कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करता रहता है, सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू ओके मेक अ चेंजेस, राइट? राइट Great. So what I am going to do, just need to click on the CPU, और यहाँ पे जाकर के लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा यहाँ पे हॉट प्लग CPU. इसको आपको चेक मार्क कर देना है. ओके दैट्स इट, नो नीड टू डू एनी एडिशनल सेटिंग्स रिक्वायर्ड. As it is in case of तो memory, we just need to select memory and enable it. हाँ जी ये जस्ट पूछना था मुझे हम्म. जैसे हमें कोई रिक्वायरमेंट आते हैं क्लाइंट की कि हाँ मतलब कुछ चेंजेस करने हैं जब हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हाँ
तब जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या कुछ मतलब जो कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने वो ये करने के बाद हम जो फर्स्टली वो मतलब हॉटलॉक अनेबल करते हैं या बाद में हम अनेबल कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, सेटअप एनवायरनमेंट ऑलरेडी हमने कर दिया, हम्म उसके बाद हर वक़्त तो हम मतलब जो लाइव है एनवायरनमेंट उसको तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि बंद ही नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में हम जब हमें ये रिक्वायरमेंट मिलती है, हम्म तभी हमें अनेबल करना है क्या सभी का एग्जैक्टली हॉट प्लग? नॉट फॉर इंटायर वर्चुअल मशीन बट एटलीस्ट जो सेलेक्टेड जिनके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है ना, उन वर्चुअल मशीन्स के हाँ, लिए हॉट प्लग हम जरूर एक्टिवेट करेंगे। ओके, ओके, ओके सो ठीक है, सो ऑल गुड, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्टिवेट द हॉट प्लग। और दोनों के लिए ओके, हमने हॉट प्लग को एक्टिवेट कर दिया है यहाँ पे, सीपीयू और रैम दोनों के लिए, एंड सेव द सेटिंग। वी सक्सेसफुली ओके, सेव्ड इट एंड लेट मी टर्न ऑन आवर वर्चुअल मशीन। अब आप अपनी वर्चुअल मशीन के रनिंग कंडीशन में, है ना, जो हमारी वर्चुअल मशीन हुँ, रनिंग हुँ, है, इस रनिंग कंडीशन में भी हम सीपीयू और रैम को चेंज कर पाएंगे। ओके, ठीक है, और अगर हम बात करें बैकएंड की, तो इन केस ऑफ बैकएंड रिमेंबर हमने दो फाइलें देखी थी, डॉट वी एम एक्स एंड डॉट वी एम एक्स एल सी के एंड वी एम एक्स टेल्डा फाइल. So यस, these files are basically responsible to perform the task. ये सभी फाइल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये हम टास्क परफॉर्म कर पाए। ऑल गुड। ओके, ओके, या गुड, ठीक है, सो लेट मी चेक कि क्या हम अपनी वर्चुअल मशीन्स के अंदर हार्डवेयर चेंजेस को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे या नहीं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन एक्स एंड go to the edit setting, and in the edit part we are able to find CPU and RAM. I think कोई भी impact नहीं पड़ा as it is। आप running condition में भी RAM को बढ़ा सकते हो। one more point, आप decrease नहीं कर पाएंगे, increase ही कर पाएंगे। ओके, ठीक है ना, अगर आपको डिक्रीज करना है तो यू ओके, मस्ट नीड टू टर्न ऑफ योर वर्चुअल मशीन, बट अगर आपको इंक्रीज करना है तो इस केस में आपका हुँ, हुँ, जो जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है वो मीन्स हॉट प्लग इसमें टास्क परफॉर्म करेगा। सो आई एम गोइंग टू मेक ओके, इट 3 gig, but before that let me show you the current hardware configuration of our virtual machine. Hardware configuration, I'm talking about the RAM. ये हमारे VM है और इसको हम एक्सेस करने वाले हैं। जस्ट नीड टू क्लिक हियर, गो टू द कीबोर्ड, console, sorry, guest OS, CM सेंट की, लॉगिन करा लेते हैं इसको। sys not system, we just need to identify the RAM capacity of our virtual machine. What is the RAM capacity of our current virtual machine? इसमें RAM कितना दिख रहा है हमें? अभी तो 2 इसमें 2 दिख रहा है मुझे, 2 जीबी दो तो जीबी की रीडिंग रैम वाला। है। I'm not going हुँ, to turn off our virtual machine. I'm not going to restart our virtual machine. In the running condition of ओके, our virtual machine, I wanted to change the capacity of RAM. ओके, Because I think we activated the hot plug. So hot plug के केस में we can हुँ, do हुँ, that, है ना? हम इसको change ओके, कर सकते हैं। ओके, Go to the action and edit setting. I'm going to make it 3 gig ओके, and save it. द वर्चुअल मशीन विंडोज 10 वॉज सक्सेसफुली रिकॉन्फिगर्ड, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो रैम कितना है, 2 GB दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ये पुरानी विंडो है, द ओल्ड विंडो, राइट, है ना। राइट, लेट मी रिफ्रेश द पेज।
open system properties, virtual machines properties. How much RAM we are able to get? या 3 रिसेट हो गया ऑलरेडी अभी, राइट। 3 जीबी हो गया अभी। हेलो। I can hear you. Yes. या सो 3 GB यहाँ पे रैम हो गया। आई डोंट थिंक कि हमने रीस्टार्ट किया राइट, था वर्चुअल मशीन को या फिर ऐसे कोई रिक्वायरमेंट आई। इज इट राइट, या हो गया ओनली ऑलरेडी। बिकॉज ऑफ हॉट प्लग? ओनली बिकॉज ऑफ हॉट प्लग यस, हमने हॉट प्लग की यस, वजह से यहाँ पे मीन्स वी आर एबल टू एक्सेस इट। ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट सिर्फ ऑफ हॉट डिक्रीज़, प्लग। डिक्रीज़ करना हो तो फिर वो आपका बंद करके हमें फिर या यू या मस्ट नीड टू टर्न ऑफ, है ना? तो डिक्रीज के यस, चांसेस तो बहुत कम यस, ही रहते हैं। मीन्स आई डोंट थिंक कि ओके, कोई क्लाइंट जो है डिक्रीज करेगा। अगर डिक्रीज करता है ना तो इट मीन्स दैट ओके, वो उसको पहले से हुँ, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ही नीड्स टू प्लान ओके, कि इफ वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज और हमें जो है ना थोड़ा सा हार्डवेयर जो है डिफरेंट डिफरेंट मशीन से कैप्चर करना है, तो दैट टाइम वी जस्ट नीड टू decrease it. It's just a 5% task maybe that performed by the organization. वैसे possible नहीं रहती क्योंकि most of clients need to add the hardware, not remove the hardware. ओके। uh, is that okay? Any question, any doubt related to the topics that we completed so far? हाँ, नहीं, कोई डाउट नहीं है मुझे। यहाँ तक ठीक है अभी तक? यस, यहाँ So तक what are ठीक है the अभी। topics that we completed today? हमने अ, जो वीएम हम इंस्टॉल करते हैं उसमें लॉग फाइल्स, जो फाइल्स एक क्रिएट दो होते हैं तीन। ऑपरेटिंग सिस्टम में, हम्म। हॉट प्लग किया हमने, VMware टूल ये किया हमने। उसके बाद जो ये छोड़ के और एक हमने किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होने के बाद उसमें लॉग क्रिएट होते हैं। हाँ जी। तो लॉग क्रिएट होते हैं ऑलमोस्ट वो 5 फाइल्स रहते हैं बेसिकली। हम्म। लेकिन उसके बाद अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम इंस्टॉल करने के बाद ऑलमोस्ट मोर देन 8 या 9 फाइल्स क्रिएट होते हैं। Correct. राइट। So we तो discussed उसके about बाद the हमने options which are available, the files which are available. राइट, हॉट प्लग का हमने भी हम किया है, वीमवेयर टूल का भी हो गया है मेरा। हमने उसके बाद हमने हॉट प्लग अनेबल करने के बाद हमने वो रैम भी हमने इंक्रीज करके देखा, वो भी वो प्रॉपर्ली हो गया, Hmm. प्रोग्राम में चेक किया। Okay, so please go through the points that we discussed in today's session and let me know if you have any doubt or any question. श्योर, श्योर। एक एक रिक्वेस्ट थी, Please. अब तक जितने भी रिकॉर्डिंग हुए हैं ना, Hmm. वो आप मतलब मेल पे मुझे कर सकते हो क्या? मतलब रेफरेंस के लिए सिर्फ वो मेरा जो मेल आईडी है आपके पास, Hmm. अरविंद2191, Hmm. उस पे मेल करके रखिए। तो जब भी वो अपलोड होता है आप उस पे मेल कर दीजिए रेफरेंस के लिए, तो मुझे वो याद रहेगा। Okay, okay. So although I have already shared the link of our previous recording, but I'm going to यस, download the all recordings and put on Google ओके, Drive and श्योर, share with you. No worry. श्योर, श्योर, श्योर। थैंक यू सो मच। ठीक है? So all good about the या points that we discussed today. या ठीक है, डन करें आज के लिए इतना बिकॉज टुमारो विल या स्टार्ट एट श्योर, श्योर, ऑन टाइम। सो यू आल्सो नीड टू सेट अप योर एनवायरनमेंट, अदरवाइज वी जस्ट कलेक्टिंग द कंटेंट, बट यू आल्सो नीड टू इम्प्लीमेंट द श्योर, श्योर, प्रैक्टिकल श्योर, बाय श्योर, सेल्फ, है ना? तो थोड़ा सा वो क्लियर श्योर, हो श्योर। जाएगा। कल मैं मतलब प्रिपेयर करके रखता हूँ, हाँ, यू जस्ट तो मतलब सेट अप द वो एनवायरनमेंट फॉर या द वीमवेयर, है ना? श्योर, 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 चलो, श्योर, श्योर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, या विल कनेक्ट या टुमारो थैंक ऑन यू। सेम टाइम। ठीक है या गाइस, बाय। श्योर, श्योर। थैंक यू सो मच। वेलकम, या बाय। बाय। Hey everyone, I hope you guys are able to hear me.
And let's take a question Q&A. And if you have any question or doubt, please let me know. Now I'm available to help you in the sense like if you have any technical question, please let me know. Okay, Milan Mahajan. So basically, so the issues with your environment, जब भी आप vCenter server install करोगे ना, it's mandatory. Yes, it's mandatory to set up vCenter server. Otherwise, you are unable to install it. आप install नहीं कर पाओगे, है ना? तो make sure कि आपके पास VMware का domain controller का setup होना चाहिए that you can configure and manage the services. Is that okay? So guys, please let me know if you have any question because I'm done for today's session. So guys, we'll connect tomorrow. I'm trying to share my screen, right? Because currently I'm able to share my screen only with the what we can say only with the YouTube. So I'm planning to make it live on different platforms like YouTube, maybe Facebook, Instagram, and also trying to share my screen on LinkedIn as well, ताकि multiple people can join at the same time, है ना? So classes are available in weekend. So I'll give you the classes, live classes in weekend. मिलन यू शुड चेंज द आईएसओ इमेज जो भी आईएसओ इमेज आप यूज कर रहे हो ना एक बार उसको चेंज करके देखो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू डीएनएस जरूर कॉन्फ़िगर करना डीएनएस का नेम रिजोल्यूशन होना जरूरी है देन यू आर एबल टू डू दैट देन यू आर एबल टू इंस्टॉल वी सेंटर सर्वर इन द एनवायरनमेंट अबाउट द टाइमिंग ऑफ लाइव सेशन सो आप एवरी सैटरडे संडे 8 PM पे ज्वाइन करो एंड आई गिव यू द लाइव क्लासेस ऑफ वीएमवेयर है ना तो एवरी सैटरडे एंड संडे 8 PM IST. एवरीवन यू कैन आल्सो पिंग मी ऑन लिंक्डइन आप हमें लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो I'll give you the solution over a LinkedIn as well. Please follow me on LinkedIn. Okay, and I hope कि DNS is working properly. Yeah, sure. You just try to connect your try to install your vCenter server and let me know if you feel like if you have any questions. So please let me know. Timing 8 PM IST Saturday and Sunday. Sorry, Sunday. सिक्वल डेटाबेस के लिए डेफिनेटली आपके जो स्टोरेज है वो आरडीएम पे कॉन्फ़िगर होना चाहिए ताकि आपको मींस कम्युनिकेशन बेटर मिल सके ऑल गुड गाइस सो आई थिंक वी गुड फॉर टुडे वी कंप्लीटेड 1.5 hour आई थिंक सो डन करते हैं आज के लिए नेक्स्ट मिलते हैं कल शाम को 8 बजे एंड if you really want to be expert in virtualization cloud technology system administrator or server do follow the teach me cloud youtube channel and also ping me on linkedin definitely आपको quality based content मिलेंगे and these content are really helpful to boost your IT career ठीक है so please do subscribe your on teach me cloud youtube channel and